हाँ. Why are you worrying, Re Babu Sudha uncle? Tomorrow is last class of hydrology, not today. अरे टेस्ट तो हो जाएगा ना, यू अटेंड एवरी टेस्ट. टेस्ट तो हो जाएगा ना, यू कैन अटेंड एवरी टेस्ट. ऑब्वियसली मिलेंगे हम. वीक में 3-4 टेस्ट तो रहेगा, पक्का रहेगा इन ए वीक. गुड मॉर्निंग संयम गारू, कैसा है? हाउ इज गोइंग ऑन संयम? एवरीथिंग गुड? सुधा को इंडिया आना पड़ेगा. No, Sudhanshu, if you are confident in the subject, don't do again. Just do revision from the notes and crash course. Just focus on remaining subjects to complete and track it. पूरा हो जाएगा अभिषेक, कोई टेंशन नहीं. We'll do everything. कल ये क्वेश्चन होगा ना, coefficient of transmissivity for a confined aquifer can be determined by pumping out test together with other relevant observation. क्या आपका पूरा सब्जेक्ट हो गया क्या निपुण गारू? रिमेनिंग सब्जेक्ट खत्म हो गया क्या? सिंपल मीन. और ओपन चैनल फ्लो शुरू करेंगे ना, ओपन चैनल फ्लो फ्रॉम 30th से ओपन चैनल फ्लो शुरू करेगा. एवरीवन जॉइन देयर आल्सो. So when you take this as with other relevant observations, so yesterday we discussed already. So Q is equal to 2 pi T S ln R2 by R1. This is only formula. क्या स्पेशल है बेटा? So here we are writing for T. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कॉल करो, नो वरीज. ओ रियली सेलिब्रेट करेंगे 30th में. T का बारे में लिख सकता है इधर Q अपॉन 2 pi S ln R2 by R1. So here relationship between R1 and R2. R2 is 10 times of R1. This is an assumption to be considered. Because nothing is given case. No information case. We have to assume at least 10 times distance. R2 is 10 times R1. So ln 10 R1 by ln 10. What is ln 10 value? No. In any well hydraulics, if there is no option to solve the question. 2.303. Q upon S 2.303 by 2 pi. So what is 2.303 by 2 pi? Q upon 2.72. Yes. 1 by 0.3665 is 2.72 ना. ज्ञानेंद्र एंड हर्षिगार, ये वैल्यू को 1 by 2.72 करो. 1 by 2.72 is that value ना. So that is why ऑप्शन ये. समझ आ गया? Imran is absent. So it is clear to everyone now this question. We'll move on now. चलो. Yes, slope गारू. 1 by 0.3665 is equal to 2.72. रेसिप्रोकल लेना है ना. सुधांकुल कहा है, कृष्णा गारू कहा चलेगा बदमाश. So this is advanced topic. अभी तक ये नहीं पूछ लिया. By chance if they can ask, we need to don't lose the marks. That is why we are talking this. Well interference. ये well interference होता है, the very advanced topic. So where 2 tube wells located, 3 tube wells located, 4 wells located. In such a case, what formulas you can take? Good afternoon Anand. अब तक हम क्या ले लिया? 2 observation wells we take and 1 design well का discharge ले लिया. Now they are asking a question like this. So no, there are 3 wells which are at equal distances. Well 1, well 2, well 3 in a triangular shape which are at equal distances. And now each well का discharge is same. What is the total discharge? Or what is Q1, Q2, Q3? What is individual discharge? So we don't have any observation well, we don't have any design well. Already existing 3 wells which are at equal distances, or 2 wells located parallel to each other, or 4 wells located at equal distances. Then what is individual well discharge? Then what is the total discharge? Because one well can interfere with the discharge of the other well. One well can disturb the discharge of other wells. The existence of several wells in a single aquifer. Causes interference of
one well with other, interference of one well with other, resulting variations in flow rate. Variations in flow rate. One well can disturb the other. One well can disturb the other. Ultimately it results variation of flow rate. अनंत गारू, एक एग्जाम लिखने के बाद ऐसा भी सोच के हमें एटलीस्ट 1 वीक 10 डेज स्टैटिक मोड में चलेगा, प्रिपरेशन का सिर्फ और एक बार अंदर आने का थोड़ा टाइम लग जाएगा, ये ब्रेक तो होना चाहिए. आफ्टर लॉट ऑफ प्रिपरेशन वी राइट वन बिग एग्जाम, डायरेक्टली अगेन जंपिंग इनटू प्रिपरेशन इट विल टेक टाइम, थोड़ा टाइम तो लग जाएगा. So now in well interference we are considering some assumptions. In well interference we are considering some assumptions. Considering all wells are at equal distances. All wells are at equal distances. First one. Second one, all wells discharge same flow rate. All wells are at equal distances. All wells discharge the same flow rate. So 10 to 15 get together. Wonderful concept. Anant garu. Nice. बहुत enjoy किया. All wells are at equal distances and all wells discharge the same flow rate. Those are assumptions for well interference. Those are assumptions for well interference. चलो हो गया. We can make a small table over here. So we can make a small table. Number of wells. हाँ वो भी बोल रहे ना. 13 क्लासेस पेंडिंग में है. ओके ठीक है, कोई बात नहीं. अनंत गारू 10 मिनट क्लास में शुरू करेंगे. इफ पॉसिबल अटेंड करो, कंटिन्यू करो. नंबर ऑफ वेल्स and we are considering unconfined aquifer related formula. कैसा हो गया एसएससी एग्जाम? confined aquifer related formula. So number of wells 1 होगा, already we studied a lot regarding it. So number of wells 2. When we talk about number of wells are 2, Q is equal to same pi k, no doubt, h1 square minus h2 square. This is also same, h1 square minus h2 square upon ln r square upon rw into a, r square upon rw into a. So here third assumption also, radius of influence and rw are same for all wells. Please add this point. अरे कुछ एक लाइन ऐड करने के क्या इतना ओवर एक्शन कर रहे हैं आप? क्या है इतना ओवर एक्शन कर रहे हैं एक सिंगल लाइन ऐड करने के लिए? आपको तो मिलेगा जोर से. रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस एंड रेडियस ऑफ वेल आर सेम फॉर ऑल. हर एक वेल को रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस एंड रेडियस ऑफ वेल बोथ आर सेम. सो दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग पाई k h1 square minus h2 square upon ln r square radius of influence rw into a, rw into a. When you take a confined, q is equal to 2 pi kb, same na, 2 pi kb. Two wells have different drawdowns, s1 minus s2. 2 pi kb, the two wells have different drawdowns, s1 minus s2. ln r square upon rw into a. So denominator is changing ना, remaining everything same. प्रीवियस हमारा वेल वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है? ड्यूपीट एंड 3. सिर्फ ड्यूपीट एंड 3 में एक्स्ट्रा क्या है बोलो? r स्क्वायर हो गया. r by r, जनरली वी टेक r by rw. नाउ वी आर टेकिंग r स्क्वायर by rw into a. मींस r by a is multiplied in the denominator. डिनोमिनेटर में r by a मल्टीप्लाई कर रहा है बस. अरे उपाध्याय गारू, आपका वाईफाई पड़ोसी वाला का वाईफाई ले रहा है क्या? पड़ोसी वाला वाईफाई ले रहा है क्या बाबू? वाईफाई पॉकेट में मिल गया क्या? ऐसा भी बोल रहे हैं, आपके भी प्रॉब्लम आ रहा है, कभी भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है. एवरी टाइम यू आर ओनली गेटिंग A is distance between wells. Anwar garu, A is distance between one well to other well, one well to other well distance. Okay, Anant bhaiya, bye bye. A is distance between well 1 to well 2, well 2 to well 3. Distance, same distance. ये समझ आ गया अभी? चलो. Now we are talking for 3 wells. Of wells are 3. ये भी सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं. पाई के. अब तो क्या लेना पड़ेगा? Because wells are several, so we take total height of aquifer hw square, total height of aquifer h square and hw square. Considering 3 wells in a triangular pattern, they have different triangular pattern, and so hw will be common for them. hw and rw will be common for them because they are different distances. It has its own cone of depression. It has its own cone of depression. It has its own cone of depression. Cone of depressions are varying, so h will be same. H will be same. So h square minus hw square ln. How many radius of influences? 3 wells को 3 radius of influence मिलेगा ना? r cube rw into a square,
r cube upon rw into a square, r cube upon rw into a square. ये समझ आ गया? सुनो एक बार अंडरस्टैंड करो, फुल टू फुल समझ आएगा आपको. हाँ एक बार समझ लो, वो भी बोल रहे हैं. 3 wells are there. Generally we are taking ln r by rw. ये तो होता जाता है regularly. But 3 wells, it has one r value, it has another r value, it has another r value. So extra how many? It has its own r value. Extra how many? R square. Extra r square. So any time when you consider one well, तो इनको रहेगा दूसरा well से distance, but remaining two may not come. Understand? This distance will be considered here based on this formula, but it is interfering with another two distances. It is interfering with another two distances. Yes, sir. One distance it can extract the water, remaining two distances it can yield the water. एक तो इनको पानी देने वाला inflow, remaining तो इनको पानी लेके चलेगा बाहर. So r square by a square, that is in the denominator. समझ आ गया? So r into r square by a square. Yes, correct. Fix तो regular formula रहेंगे, fix तो regular formula रहेंगे. Clear now? Now, same. Q is equal to 2 pi kb. Q is equal to 2 pi kb. S1 minus S2 ln r cube upon rw into a square. R cube upon rw into a square. So इधर तो ये काम करो, ये डेल्टा एस डायरेक्टली एस भी ले सकता है. S1 minus S2 आर डेल्टा एस. Now number of wells are 4. Same. Pi k capital H square minus HW square upon ln r to the power 4 root 2 rw a cube. root 2 extra आ गया रे बाबा. root 2 तो extra आ गया. Because full radius of influence is not working in this case ना. In this case full radius of influence तो काम नहीं कर रहा है ना, क्योंकि radius of influence यहां से ले रहा है, यहां से ले रहा है. काम करेगा full काम करेगा. बोलो. So this is the well. This is the radius of influence we are seeing. Now also this radius of influence shared by other well also. Other well also equally sharing. So that sharing will be represented by r by root 2. Now radius of influence will become actually r by root 2. Into how many extra are there? R cube. So we can take r to the power 4 by root 2. R power 4 by root 2. ये तो कॉमन होता है ना. r cube by a cube तो कॉमन होता है ना. r is now replaced by r by root 2. r is now replaced by r by root 2. Same. Q is equal to 2 pi kb. अब तो s ले लो, just s ln r to the power 4 root 2 rw a cube. root 2 rw a cube. So even here also you take s directly, no problem. S minus s2 कोई दिक्कत नहीं. You can take directly s. Yes, r by root 2 तो फिक्स होता है. That is why हर्षगारू ऊपर भी ले सकता है. So सुधागारू सुनो, if they say only draw down, yes ले लो. If they give two different draw downs, delta s ले लो, कोई दिक्कत नहीं. Mostly they give one draw down only. Then yes, two draw downs given delta s. चलो क्लियर, खत्म. सो अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आ गया, यू डोंट वरी रिगार्डिंग दिस. ये व्हाट इज ये? पीपल आर आस्किंग व्हाट इज ये? ये इज डिस्टेंस बिटवीन वेल्स. ये तो इक्विलेटरल डिस्टेंस होता है. हाँ, बिटवीन टू वेल्स. अरे बाबा, ओके खुश रहो. ओके बाबू, ये तो इक्विलेटरल डिस्टेंस रहेगा. इक्विलेटरल डिस्टेंस. H is thickness of aquifer, no doubt. Same like as confined and unconfined, we solve so many questions. Same H, same HW, कोई दिक्कत नहीं. So हो गया, चलो. The last chapter number 12, stream gauging. Yes, पक्का वेल हाइड्रोलिक्स से 2 मार्क तो पक्का मिलेगा. 2 marks must in वेल हाइड्रोलिक्स, नो डाउट. So chapter number 12, stream gauging. So you can write river gauging. Well hydraulics and hydrograph are obviously important. Others. Stream gauging also you can write river gauging. Good writing हो गया. सुनो ध्यान से. So हम शुरू किया हाइड्रोलॉजी. पहले हम क्या बात किया? Once we started hydrology, we discussed regarding पूरा का पूरा full to full natural hydrological phenomena.
हमारा हाथ में नहीं होने वाला. Precipitation measured using rain gas, using empirical equations, using natural characteristics, precipitation. Then followed by evaporation, using evaporation pan, using balance equation, water balance equation, energy balance equation, so many empirical equation. Same evapotranspiration, empirical equation. Infiltration, infiltrometer, rainfall simulator, infiltration index, Hartman's formula. Then using all this information, runoff. Runoff is determined by Dickens formula, Rives formula, flood hydrograph formula, rational method, so many methods. Then after that, using this entire data, we plotted hydrographs and mathematically analyzed it. So this entire thing rotates around surface water, everything, measurement of values in the surface water, yes or no, in the atmosphere. Whatever we deal there up to that, everything, whatever measured in the surface water. Now when you come to the hydrograph, you are talking about a catchment. What is a catchment? Catchment may be a lake, pond, reservoir. Storage water body, storage structure. ये स्टोरेज स्ट्रक्चर को अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दोनों का डिस्चार्जेस निकल गया ना. फ्रॉम हाइड्रोग्राफ अपस्ट्रीम डिस्चार्जेस, फ्रॉम फ्लड रूटिंग डाउनस्ट्रीम डिस्चार्जेस. ऐसा नो, फ्रॉम हाइड्रोग्राफ अपस्ट्रीम डिस्चार्जेस, फ्रॉम डाउनस्ट्रीम डिस्चार्ज, फ्रॉम फ्लड रूटिंग. आल्सो वी फाइंड आउट सबसरफेस फ्लो. वेल हाइड्रोलिक्स में क्या कर लिया? सबसरफेस फ्लो हो गया ना. सबसरफेस फ्लो, जोन ऑफ सैचुरेशन का अंदर पानी क्या होता है? डिस्चार्ज टू वेल. डिस्चार्ज टू वेल इज नथिंग बट सबसॉइल. हाइड्रोलॉजी डील्स विद, हम ऐसा बात करेंगे हाइड्रोलॉजी का अंदर. हाइड्रोलॉजी डील्स विद व्हाट एंड व्हाट? हाइड्रोलॉजी डील्स विद सरफेस स्ट्रेटा, सबसरफेस स्ट्रेटा. इस सरफेस में क्या हो गया? एटमॉस्फेरिक फिनोमिना. एटमॉस्फेरिक में प्रेसिपिटेशन, रन ऑफ, इन्फिल्ट्रेशन, evaporation, evapotranspiration. So subsurface we studied under well hydraulics. Then surface में we have storage water body, flowing water body. So ये storage water body के बारे में again run off and hydrograph में खत्म कर लिया. Run off, hydrograph and flood routing. So what is remaining? पूरा बात किया हम हाइड्रोलॉजी का. कुछ छोड़ दिया क्या? एनीथिंग लेफ्ट ओवर? बोलो. ये फ्लोइंग वाटर बॉडी का डिस्चार्ज मेजरमेंट, इनका डिस्चार्ज मेजरमेंट तो लेफ्ट हो गया. सबसरफेस पूरा का पूरा हाइड्रोलिक्स में हो गया. सरफेस में एटमॉस्फेरिक फिनोमेना हो गया. सरफेस में स्टोरेज वाटर बॉडी हो गया. बट सरफेस में फ्लोइंग वाटर बॉडी है, दैट इज स्टडीड अंडर स्ट्रीम गाजिंग. अंडरस्टैंड? मेजरमेंट ऑफ डिस्चार्ज or flow rate, measurement of discharge or flow rate in a flowing water body like river, canal or stream. Measurement of discharge or flow rate in a flowing water body like a river, canal or stream by making a gauze post at the bank of river, at the bank of stream is called as a river gauzing or stream gauzing. River gauzing or stream gauzing. Hydrometry, the science of measurement of flow rate of a water body. The science of measurement of flow rate of a water body, we call it as hydrometry. Hydro means water, metry means measurement. Hydro में क्या आता है? Metry means measurement. So measurement of water flow rate, that is hydrometry. So all other structures of water का बारे में हो गया. सिर्फ river और stream का बारे में बात कर रहे हैं. That is called stream gauzing or river gauzing. So इधर तो हमको एक गाज पोस्ट तो निकलना पड़ेगा. We have to arrange some gas post. We need to place some gas post. एक गाज पोस्ट क्या होता है? पहले एक बात बोलना पड़ेगा. 1 minute. So we have given all this, na? We have given all this here, na? So no, all atmospheric phenomena are according to empirical equation. All atmospheric phenomena are according to some rain gauzes, infiltrometer, evapotranspirometer, कुछ भी. But they are giving approximate values only, na? Can you get 100% accurate? Even in the flood routing technique, catchment related hydrographs, even in the flood routing technique, approximate only. Even in well hydraulics also, approximate value of discharge. But very important, the only most accurate measurement is stream gauge. Among all the measurement in hydrology, stream gauge is accurate. Among all measurements in hydrology, the stream flow measurement is only, because it is a practical approach, the stream flow measurement only is the parameter
मोस्ट एक्यूरेटली मेजर्ड, मोस्ट एक्यूरेटली मेजर्ड, स्टार मार्क लगा दो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो, अरे किसी को कंफ्यूजन होगा कमेंट बॉक्स में बोल सकता है, यू डोंट हैव एनी रेस्ट्रिक्शन टू से एनीथिंग इन कमेंट बॉक्स। सो नाउ विल टॉक अबाउट गाज पोस्ट, गाज साइट, गाज पोस्ट और गाज साइट। व्हाट इज दिस गाज पोस्ट और गाज साइट? क्या होता है गाज पोस्ट और गाज साइट? द लोकेशन एट बैंक ऑफ स्ट्रीम, द लोकेशन एट बैंक ऑफ स्ट्रीम, क्या करने के लिए? where measurement related work carried out, measurement related work carried out, the location at bank, river bank, stream bank में measurement related काम कहाँ करेंगे? measurement related काम हम कहाँ करेंगे? इनको बोलते हैं गाज पोस्ट और गाज साइट। गाज is an instrument, if they say simply गाज, गाज will be an instrument, if they say गाज पोस्ट और गाज साइट, ये तो जगह होता है, लोकेशन, लोकेशन होता है कहाँ मेजर कर रहा है। so we have some, yes, सिलेक्शन ऑफ गाज साइट, गाज साइट सेलेक्ट करने के लिए पहले बात ये बोलना पड़ेगा, विड्थ ऑफ द रिवर शुड बी मिनिमम, विड्थ ऑफ द रिवर शुड बी मिनिमम, इतना कम होना चाहिए, क्योंकि विड्थ इतना बड़ा 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर होगा, मेजरमेंट मुश्किल होता है। मेजरिंग द रिवर, ये देखो दिस इज अ रिवर विड्थ, सो इनको मेजर करना आसान होता है, मेजरिंग विड्थ ऑफ द रिवर एट डिफरेंट पॉइंट्स, ओके, बट इतना बड़ा होने के बाद मुश्किल होता है मेजर करना। फ्लो भी एक्यूरेट नहीं मिलेगा हमको, फ्लो भी अप्रॉक्सीमेट मिलेगा। इफ यू वांट टू गेट एक्यूरेट वैल्यू, द विड्थ मस्ट बी मिनिमम, विड्थ मस्ट बी मिनिमम, it should not be curve of the river, curve of river में hydraulic jump हो सकता है, water flows faster than normal, at the curve water flows faster than normal, external pressure forces act on it, curved forces, so it should not be selected on the curve of the river, and no scouring effect, क्योंकि scouring होने के बाद depth differ होता है ना, because of scouring depth varies, it is not original depth, it's not original depth, it will be modified depth. Scouring means erosion, erosion बोलते हैं हर्षिका, erosion, erosion होने के कारण से depth कम हो जाएगा ना, बॉटम बेड का सॉइल एरोड हो गया, डेप्थ बढ़ जाएगा, वैल्यूज वेरी होता है, स्काउरिंग नहीं करना पड़ेगा। चलो कंप्लीट राइटिंग, नो प्रैक्टिकली तो स्काउरिंग हो जाएगा, बट थ्रू आउट द लेंथ नहीं हो जाएगा ना, थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द रिवर, थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रीम नहीं हो जाएगा। यू सेलेक्ट अ साइट वेयर देयर इज नो स्काउरिंग, हमको सिर्फ 100 मीटर डिस्टेंस चाहिए बस। सुनो उपाध्याय गारू, पूरा रिवर का लेंथ 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर में 100 मीटर विदाउट स्काउरिंग नहीं मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा क्या? चलो कंप्लीटेड राइटिंग ना, राइटिंग फिनिश, 3 पॉइंट्स लिखना हो गया। अरे आपका पॉइंट को भी प्रॉब्लम बाय सिल्टिंग तो नहीं हो जाएगा, प्रॉब्लम बाय सिल्टिंग तो नहीं हो जाएगा। ये तो assumptions में चल जाएगा ना सुधांशु, बार-बार ये बोलना जरूरी नहीं। We must think like laminar flow to travel, thus is law valid, continuity equation occurs, ये पूरा बार-बार बोलना जरूरी नहीं बेटा। If you do any calculation related to water, all these must be valid. Study uniform flow, horizontal flow, पूरा वैलिड होना चाहिए। So we have different types of gases. We have different types of gases. First one, staff gas. Staff gas. So this is the gas placed at bank. Fixed one. Fixed gas at bank, provided with abutments and piers. Supports there इनको, ये gas को supports are provided with abutments and piers. This is for stream flow measurement. For stream flow measurement. For stream flow measurement. Staff gas. Staff gas. Float gas. I hope you remembered. We have drawn a picture of a floating pan. Floating pan. पानी का ऊपर पान डाल रहा है. And these float gases, automated recording, like a recording rain gases, floating evaporation pan. Sorry, join, but O is silent. S is silent. अरे बाबू. Automatic recording. Example होता है evaporation pan, recording rain gases. Evaporation pan and recording rain gases. And it can be accommodated with, must be provided with stilling well. Stilling well required for measurement. Stilling well required for measurement. Stilling well पता है ना, evaporation pan में देखा, which acts like a siphon tube, emptying well, stilling well, measuring well. Stilling well is required for float gas. किसी को डाउट है stilling well के बारे में?
अरे बोलो क्या हो रहा है, स्टीलिंग वेल पता है या नहीं? ओनली 3 मेंबर्स इन द क्लास। यस, ये सुनो, this is a pan, okay, and it was provided in the middle with a stilling well. Provided in the middle with a stilling well. 1 minute, 1 minute, 1 minute. So now when water in the well, evaporation pan rises up, rises up, rises up to top. फिर भी रेनफॉल आ रहा है, फिर भी एक्स्ट्रा पानी आ रहा है। ये एक्स्ट्रा पानी लेके डिस्चार्ज करेंगे अंदर, डिस्चार्ज करेंगे बिकॉज दिस पानी इज प्लेस्ड इन ए फ्लोइंग वाटर। दिस पानी इज प्लेस्ड इन ए फ्लोइंग वाटर, रिवर और लेक और कैनाल। पानी इज प्लेस्ड अबाउट, पानी इज प्लेस्ड अबाउट इतना, एक्सेस फ्लो कमिंग, दैट शुड बी अगेन रिलीज्ड इनटू रिवर। अदरवाइज ओवरफ्लो हो जाएगा ना, डूब जाएगा। ओवरफ्लो होने के बाद पूरा का पूरा ओवरफ्लो फ्लड हो जाएगा। टू अवॉइड दैट, क्लियर? सुनो, दिस इज रिवर और लेक वाटर बॉडी, इनका ऊपर evaporation pan डाल दिया, floating pan. This is the evaporation pan, which is a floating pan we have placed. Now it can collect water up to this level. ज्यादा होने के बाद पानी ऐसा डूब जाएगा, ऐसा चल जाएगा। Instead of sending like that, we are making an arrangement at the top level. So this is a tube-like arrangement. Tube-like arrangement. Whenever water level of the pan greater than stipulated, then immediately that go inside. Excess water immediately that go inside, releases into water surface. समझ आ रही है दिव्यांशु? Clear बाबू चपंडी? Is that clear? What is the stilling well now? So the stilling well is used for float gas. Will be used for float gas. Wire gas. Wire gas. Measurement of flow rate to difference between top and bottom levels. Top and bottom water levels. That is by measuring head. Head of flowing water पता होगा, discharge फ्लोइंग वाटर का हेड आपको पता चला, तो फ्लोइंग करने के बाद मेजरमेंट ऑफ डिस्चार्ज आसान होता है या नहीं? इट इज इजी और नॉट? चलो, नीड टू राइट दिस वन संयम। आज तो थोड़ा डर लग रहे बच्चे लोग, क्या हो गया रे बाबू? कुछ लोग तो एब्सेंट है। हाँ, नींद आ रहा है क्या? किसी को नींद आ रहा है क्या? So these are the methods, sir. These are the methods, sir, for finding the discharge stream flow measurement. Direct method, indirect method. Direct method में velocity area method, float method, dilution technique. Indirect method में slope area method, stage discharge, hydraulic structures. Advanced method होता है moving boat method, ultrasonic method, electromagnetic method. ये सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा लिखना जरूरी नहीं है, चार्ट लिखना जरूरी नहीं, स्क्रीनशॉट तो ले लो। Measurement of discharge by area velocity method. Measurement of discharge by area velocity method. So it follows Q is equal to AV, continuity equation. I told you already, all basic laws are valid. So to find out using Q is equal to AV, we need two values. No? We need two values. One is measurement of area. One is measurement of area. Second one is measurement of velocity. Measurement of area and measurement of velocity. We need to measure the area velocity method. Area पता करना पड़ेगा, velocity पता करना पड़ेगा, so that you can get area into velocity discharge. Area into velocity discharge. Area can be measured using sounding rods, sounding cables, sounding rods, sounding cables. We can use by surveying techniques. What are surveying techniques we can use? Total station or theodolite measurement. Area you can derive by total station or theodolite measurement. Because the sounding rod and the sounding cable will give depth of flowing water. Depth of flowing water. Total station or theodolite will give width of flow. Depth width पता होने के बाद ऐसा हो जाएगा ना then. If you know the depth and width, it should be easy ना. आपको depth width पता करने के बाद finding velocity will be easy ना बेटा. बोलो. Velocity measurement. Velocity measurement is by surface float method,
subsurface float method, current meter method, moving boat method, velocity rod method. Velocity is obtained at every section by different approaches. Velocity will be obtained at every section, हर एक section में. Surface float, subsurface float, current meter, moving boat, velocity rod. Moving boat, velocity rod. That should be carried out for measurement of velocity. So area तो मिलेगा by 2. One is in terms of depth, in terms of width. Depth तो sounding rod या sounding cable का वजह से. Width तो मिलेगा using the theodolite technique or total station technique. And finally, measurement of velocity is a completely different concept. Velocity तो different instruments use करेंगे. Cork method, float method, subsurface float method, velocity rod method, moving boat method. Instrument also there, current meter method. We can use all these things. ये हो गया. In India we use this method only. We'll talk about it. India में हम क्या use करेंगे वो बात करेंगे. टेंशन में जल में मत चलो बेटा. देखो this is the section. This is the cross section, subsection of the river. हर एक जगह में depth differ होता है ना. Depth here is different, depth here is different, depth here is different, depth here is different. So the entire cross section is differentiated into various sections. And also हर एक जगह में width also varying. हर एक जगह में width may be varying or maybe sometimes same. Maybe varying, maybe sometimes same. So you can take area is equal to depth into width. Each subsection area is equal to depth into width. Then overall area you will get discharge into velocity. Overall area you will get discharge into velocity. So 1 minute. ये तो खत्म. Done. Now please ensure this is your given area. Subsection, cross section. Okay. This is the top water level. Free surface of water level. Top water level. So you have different sections here. Section 1, Section 2, Section 3, Section 4, Section 5, Section 6, Section 7. Is that clear? So now we are writing here. This is a W1, W2, W3, W4. Maybe with the same, or sometimes it may differ also, beta. Don't imagine always it will be same. Okay. Don't imagine always it will be same. Sometimes it may differ also. Sometimes it may differ also. So we are taking W1 to W8 widths. Measure to theodolite section, total station sections. तो अब तो मिलेगा हमको. अब क्या मिलेंगे? This is Y1 ना? Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7. So for regular sections बात कर रहे हैं, ठीक है? Regular sections. For regular sections. What are regular sections? Regular sections are possible W2 to Wn-1. Because these two are different sections. ना देखो एक बार. W1 is a different section. W8 is a different section. Remaining all, we can take it as a trapezoidal sections. Remaining all, we can take it as a trapezoidal sections or not. बोलो. So for W2 to Wn-1, W2 to Wn-1, we are getting average width of the section taken. Average width of the section taken. For all, समझ आ गए? For all remaining. Okay. For all remaining. W1 plus W2 by 2 upon 2 into W1. 2 into W1. W1 plus W2 by 2 upon 2 into W1. So ये तो समझ आ रहा है नहीं? Is that clear or not? Is that clear or not? Please confirm me once. I repeat. If you are finding for Wn, okay? If you are finding for Wn, then you take Wn-1 plus Wn by 2 upon 2 into Wn-1. समझ आ रहा है? W2, W1 plus W2 by 2 W1. W3, आपको W3 होना चाहिए. Then W2 plus W3 by 2 upon 2 W3. समझ आ रहे ना? कौन सा पार्ट है? अरे if you are finding for second, you are taking this. If you are finding 2 W1, this is regular section only, na? This is regular section. All are regular sections only, na? So there is an influence of width of previous section also. अरे बाबू, n is now. Here n is. समझ आ रहे हैं? Wait, बेटा. So here n is 2 to n-1. 2 to n-1. Means if you need n is equal to 3, you need W3, na? So you take W2 initial width, present width by 2, W3 by 2, 2 into previous width. समझ आ गया? n is equal to 3. n is equal to 4 W4, n is equal to 5 W5. But ये फार्मूला में 1 not included, n not included. 1 not included, n not included. समझ आ गया ना? चलो. ये तो खत्म? ये तो क्लियर? खत्म? कंप्लीट राइटिंग? Oh. Small variation. 1 minute, guys.
Okay, you write here for not for regular sections. This is not for regular sections. Not for regular sections. This is you can take W1 and WN. ये काम करो, कोई दिक्कत नहीं. Strike off करो, will write separately. Please strike off, will write separately. Please strike off, will write separately. Otherwise, you'll confuse. Otherwise, you will confuse. Please. For W1 and WN, okay? For W1 and WN, ये फार्मूला लिखना पड़ेगा, please. For W1, W1 plus W2 by 2 by 2 W1. This is for W1. What we have written first formula? That is for W1. Sudhankul, don't cry. W1 is written W1 plus W2 by 2 upon 2 W1. WN को ऐसा लिखो. WN को ऐसा लिखो. WN को. WN minus 1 by 2 2WN. 2WN. WN plus 2 WN minus 1 by 2 2WN. These are not regular sections. These are not regular sections. Now you write for regular sections. ये तो पूरा कट करो बोल दिया ना. ये पूरा कट करो उधर. ये तो पूरा कट करो. ये पूरा कट करो. रेगुलर सेक्शंस क्या होता है? ये तो आसान रेगुलर सेक्शंस. W22 WN minus 1. छोड़ दो, एक एक्स्ट्रा पेज ले लो. 1 kg आटा एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, एक एक्स्ट्रा पेज ले लो. W22 WN minus 1. ये तो समझ आ गया. ऊपर वाला पहले ही बताओ. How to find out width 1 and width n, last width and first width. How to find out last width and first width. ये तो समझ आ गया ना बाबू. ये तो समझ आ गया ना, फर्स्ट width and last width. चलो. For example, you need WI. WI is equal to WI by 2 plus WI plus 1 by 2. WI by 2 plus WI plus 1 by 2. ये WI क्या होता है? So for example, अब लिखो. You need W2 value. You need W2 value. W2 by 2 plus W3 by 2. You need W3 value. W3 by 2 plus W4 by 2. You need W5 value. W5 by 2 plus W6 by 2. समझ आ रहा है अभी? रेगुलर सेक्शन को कैसा ले लेंगे, समझ आ रहा है? सिंपल. सिंपल एवरेज, निपुण से एवरेज. निपुण से एवरेज हो जाएगा ना? So I will be 1 2 3 I is a 2 to n minus 1. Yes, I is a 2 to n minus 1. Very good. This is correct. Sarovar. I value varies. I तो क्लियर हो गया. नो कंफ्यूजन. नो कंफ्यूजन अभी. क्योंकि इन्फ्लुएंस ऑफ नेक्स्ट बिट इज देयर. निपुण. ऐसा कंफ्यूजन क्योंकि इनको इधर ऐसा आ रहा है ना पानी, ये थोड़ा सा पुश करेगा. Then it is moving forward into W3. W3 moving forward into W4. W4 moving forward into W5. ऐसा प्रोग्रेसिव में थोड़ा सा विथ पानी ऐसा चलेगा ना, पानी स्टैटिक नहीं रहेगा ना. On the top surface water is moving like this ना, विथ का सेक्शन में. विथ का सेक्शन में always some waves are moving ना. Considering that wave motion, थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो लेना पड़ेगा, ऐसा सोचो. सुना लो. WN वाला को गुड संयम. ये तो WN है, okay, but it is not carrying full because it has obstruction wall. Wall is pushing back. Water from the wall is pushing back ना. So that ये विथ लेना पड़ेगा इनके लिए. We have to consider that width, previous width, because water moving back to previous width. इनका वजह से. ठीक है. अब तो डिस्चार्ज क्या आएगा? अब तो डिस्चार्ज क्या आएगा? So A1 W1 Y1, A2 W2 Y2, A3 W3 Y3 ऐसा चलेगा. A1 A2 A3. So now Q is equal to A1 V1, A2 V2, A3 V3, and so on A and Bn. Sum of individual area into individual velocity. AI VI हो गया. Sum of individual area into individual velocity. Completed? Done? The cross section of a small river subdivided into 7 segments. Cross section of a small river subdivided into 7 segments of 1.5 meter of each width. Average depth velocity at different depths were measured during field campaign at the middle of each segment width. Discharge चाहिए. एक काम करो, अच्छे से टेबल लिखो प्लीज. Write down the table first. Write down the table first.
अरे बाबा और 3 कॉलम्स लिखने का स्पेस चाहिए टेबल के बाद. नेक्स्ट वी नीड 3 more columns to write. Okay, ऐसा लिखो टेबल, पूरा नोट्स में मत लिखो, पूरा फुल पेज में. आफ्टर दिस यू गेट again you need 3 more columns. ओ यू हैव रिटन फुल पेज में टेबल खत्म. अरे देखो स्लाइड में फुल पेज में हो गया, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट पेज में लिखो, नो प्रॉब्लम, यू राइट, यू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पेज. ओके, व्हाटएवर वी आर राइटिंग यू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पेज. दैट इज सॉल्यूशन. ये तो गिवन डेटा है ना, दैट इज गिवन डेटा, सॉल्यूशन आएगा नेक्स्ट पेज में, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूशन आएगा नेक्स्ट पेज में. ओके, राइट डाउन. कंप्लीटेड राइटिंग. टेबल तो खत्म हो गया ना, टेबल तो खत्म हो गया ना. अरे खत्म हो गया बोलना, और टीटी बोल रहे हैं अभिषेक भैया. अरे कल तो सुधांकुल हर एक स्टूडेंट को पार्टी दिएगा. एवरीवन प्लीज अटेंड द क्लास टुमारो. अरे क्यों रे बाबू, आटा पार्टी. आदर्श गारू होगा, आइसक्रीम पार्टी दिएगा. आदर्श उपाध्याय तो आइसक्रीम पार्टी दिएगा. हाइड्रोलॉजिस्ट बन गया. हाँ ऑलरेडी ही इज हाइड्रोलॉजिस्ट, इनको जॉब भी मिल गया ना. कभी कभी बारिश का अंदर चल रहा है. चलो, सो फर्स्ट वी फाइंड आउट वेलोसिटीज. वही वेलोसिटीज तो दिया है ना. देखो ये फर्स्ट सेगमेंट में 1 वेलोसिटी ओनली, नो प्रॉब्लम, टेक डायरेक्टली. बट रिमाइनिंग सेगमेंट में 2 वेलोसिटीज. Why 2 velocities? Because they have measured velocities at 2 depths, 0.2d, 0.8d, 2 depths. So velocity to be taken as average velocity 0.2d plus 0.8d. Sorry, velocity at 0.2d, velocity at 0.8d by 2. Velocity at 0.2d plus velocity at 0.8d by 2. बोलो average values. 0.76 plus 0.7 by 2. 0.76, 0.7 by 2. 0.73 ना. 1.19 plus 1.13 by 2. 1.19 plus 1.13, you get 1.6. 1.16. 1.25 plus 1.1, so 2.35. 2.35. 1.17. 1.13 plus 1.09. 1.11. 1.11 or 1.11 ना? हाँ. 0.69 plus 0.65. 0.67. 0.42. वेलोसिटी तो खत्म. डेटा में क्या बोल रहा है? 7 सेगमेंट्स को डिवाइड कर दिया. 7 सेगमेंट्स, हर एक सेगमेंट को 1.5 ईच विड्थ बोल दिया. सो शैल वी टेक इक्वल विड्थ्स? यू टेक इक्वल विड्थ्स W2 to W6 1.5, नो डाउट ना. इक्वल विड्थ्स W1 एंड W7 चेंज तो होना चाहिए. W1 इज इक्वल टू W7. W1 1.5, W2 1.5 by 2, 2 into W1. अरे अच्छे से सॉल्व करो बाबू. 2.25 by 3. होल स्क्वायर कर. अरे लंबा फार्मूला भूल गया. होल स्क्वायर बनाओ, फार्मूला का होल स्क्वायर डालो प्लीज. होल स्क्वायर डालो फार्मूला को. 0.5625. 0.5625. वित्त अलग कैसा होता है मनीष, चेक करो एक बार. ओके, मनीष गारू के लिए हम कर रहे हैं W2 के लिए 1.5 by 2 plus 1.5 by 2. क्या है मनीष गारू के लिए? चेक करो बेटा प्लीज एक बार मनीष गारू के लिए प्लीज चेक करो. क्या है W2? देखो मनीष, आ गया बेटा. हाँ चलो, वित्त क्या होता है अभी? वित्त लिखो. फर्स्ट 1.5625. 0.5625. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 0.5625. अब तो डिस्चार्ज आएगा. WYV. दिस इज Y. दिस कॉलम. मल्टीप्लाई इंडिविजुअल डिस्चार्ज वैल्यूज मिलेगा आपको. फटाफट मल्टीप्लाई करो बेटा. .09. ओके, देन ये 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पता है ना. 0.4, 0.4, 0.5625. तीनों का 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. हाँ, 0.7665. गुड. 2.088. 2.457. 1.8315. हाँ, please add the values.
8.143 हो गया। एट 8.143 मीटर क्यूब पर सेकंड मिल गया बाबू। मनीष भैया समझ आ गया? हाँ ये तो हो गया। सुनो निपुण जी 1.5 मीटर इंटू 7 ना सेगमेंट्स, 1.5 इंटू 7 मीन्स 105 मीटर विथ, मोर देन 100 मीटर विथ, बहुत बड़ा हो जाता होता है ना विथ। 8.606 8.16 8.14 कोई दिक्कत नहीं उपाध्याय, कोई दिक्कत नहीं। सुधा अंकुल खुश हो गया? चलो विल मूव ऑन गाइस। समझ आ गया एरिया वेलोसिटी, एरिया वेलोसिटी मेथड को। क्वेश्चन स्लाइड सतीश गारू को। क्या बोल रहे सतीश? हो गया? सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी मेजरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। वेलोसिटी मेजरमेंट में सो मेनी मेथड्स आर देयर ना। फर्स्ट वी टॉक अबाउट सरफेस फ्लोट मेथड। सरफेस फ्लोट क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट पानी का ऊपर फ्लोट हो जाएगा, एनी ऑब्जेक्ट व्हिच विल फ्लो ऑन द सरफेस ऑफ वाटर दैट विल बी फ्लोट ना। एनी ऑब्जेक्ट व्हिच विल फ्लो ऑन द सरफेस, व्हिच कैन फ्लो ऑन द सरफेस दैट विल बी फ्लोट ना। ऐसा नो, सरफेस फ्लोट होता है वो। बेस्ट एग्जांपल कार्क, प्लास्टिक बॉल। कृष्णकांत भी होता है, वो इतना पतला है कृष्णकांत गाल। हैव यू सीन कृष्णा? अरे इतना पतला बच्चा है वो, ये पानी में फ्लोट हो जाएगा, इनका डेंसिटी पानी का कम है, ये फ्लोट हो जाएगा पानी में। हाँ सो सरफेस फ्लोट जैसा यूज करेंगे इनको। सो व्हाट आर वी डूइंग इन दिस मेथड? देखो दिस इज आवर रिवर फ्लो, दिस इज आवर फ्लो, रिवर फ्लो बोल रहे हैं इनको। पानी ऐसा चल रहा है, रिवर फ्लो, रिवर फ्लो। नाउ एट द बैंक वी आर फिक्सिंग द गाज पोस्ट। बैंक ऑफ द रिवर और बैंक ऑफ द स्ट्रीम में एक गाज पोस्ट बना लिया। सो दिस इज सेलेक्टेड फ्रॉम द बैंक, दिस इज गाज पोस्ट। सो वी सेलेक्टेड 2 पॉइंट्स, वी मार्क्ड पॉइंट ए, पॉइंट बी। सो ये बैंक कैसा होता है? दिस इज द वाटर फ्लोइंग, दिस इज द बैंक। समझ आ रहा है? दिस इज द फ्लोइंग वाटर एंड दिस इज द बैंक। सो इधर आदर्श उपाध्याय गारू खड़ा है बैंक का ऊपर और देख रहे हैं, एंड हियर सुधा अंकुल, सुधा अंकुल पानी का अंदर। आदर्श गारू इधर खड़ा है बैंक का ऊपर, आदर्श गारू खड़ा है। समझ आ रहा है बैंक कैसा होता है? देखो एक बार, दिस इज द बैंक और पानी तो इधर है, फ्लोइंग वाटर इज हियर। ये तो रिवर बैंक होता है ना, अबटमेंट होता है, रिवर बैंक होता है, फ्लोइंग वाटर। सो इधर उपाध्याय गारू देख रहे हैं, इधर सुधा अंकुल चले गए पानी का अंदर। क्या करेंगे सुधा अंकुल पानी का अंदर? अरे इधर तो डालो एक कार्क, पुट कार्क एट पॉइंट ए। इंस्ट्रक्शंस बोल रहा है आदर्श उपाध्याय स्टैंडिंग हियर ना, रिवर, दिस इज द बैंक। देखो आदर्श उपाध्याय स्टैंडिंग हियर, दिस इज द फ्लो ऑफ रिवर। सुधा अंकुल इधर है ना, इधर से काल से बात करें, इंस्ट्रक्शंस दे, कहां रखना पड़ेगा, बिकॉज़ इट शुड बी प्लेस्ड एग्जैक्टली पैरेलल टू ए। द कार्क का बॉल टू बी प्लेस्ड एग्जैक्टली पैरेलल टू ए। नाउ आदर्श स्विच ऑन द स्टॉपवॉच। आदर्श क्या करेंगे? ही कैन स्विच ऑन द स्टॉप क्लॉक। नाउ ये फ्लोट तो चलेगा ना, द फ्लोट इज मूविंग फॉरवर्ड ना, फ्लोट इज मूविंग फॉरवर्ड ना। नाउ आदर्श आल्सो कमिंग हियर, इधर से इधर तक पहुंच गया, ही इज लुकिंग एग्जैक्टली इधर से इधर तक ए टू बी, by what? By running, by moving. And at what time it came to the point? At what time it came to the point? Flow. He stopped the watch. So time तो मिलेगा स्टॉप क्लॉक से, टाइम तो मिलेगा स्टॉप क्लॉक से। नाउ ये टू बी डिस्टेंस होता है ना, इनको बोलते हैं रीच, रीच और रन, यल, यल। टाइम तो मिलेगा ना, टाइम नोटेड, टाइम ऑफ ट्रैवल by float, by float between A to B. Time of travel by float between A to B in stream, noted by stopwatch, by stop clock. So now what is velocity? Length by time, reach by time of travel, reach by time of travel मिलेगा, मिलेगा या नहीं? So whatever you are getting, that is called velocity of flow, velocity of flow, reach upon time of travel, reach upon time of travel. Are cork will be thrown and just allowed to pass it na, Satish garu. Just cork is thrown in the water, allowed to pass it, and the person is at a bank na, person is at a bank. The cork wood will travel the distance na, cork wood will travel the distance na. हाँ देखो पिक्चर मिल गया, देखो एक बार, दिस इज द फ्लोट, दिस इज द फ्लोट। पॉइंट यहां से यहां डाल दिया रीच, यहां से यहां पॉइंट डाल दिया रीच। एक बार ये चेक करो, गुड ज्ञानेंद्र, बहुत अच्छे पिक्चर डाल दिया आप। सो यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से ट्रैवल करेगा ना। हाउ मच टाइम लगेगा इनके लिए, हाउ मच टाइम लगेगा इनके लिए, ये तो पता करना पड़ेगा, वी मस्ट नो। समझ आ रहा है अभी? क्लियर टू एवरीवन? इज द क्लियर टू एवरीवन बाय दिस पिक्चर? So now actual mean velocity. After this is surface velocity actually. This is surface velocity na. Velocity of flow reached by time of travel.
but we need a total full depth velocity, no? Not just the surface velocity. So you take a coefficient 0.85 into surface velocity. 0.85 into surface velocity. 0.85 is coefficient. 0.85 is coefficient. This one lucky. Subsurface float method. So if you release the float car plastic ball, will it go forcefully in the direction of flow? Is it true? Will it travel only in the direction of flow? Is that possible? Bolo fatapat. Is that possible? Exactly, will it travel in the direction of flow? So there is no control over it. There is no control over it. So to make it to be control the direction to be travel only in the direction of flow of water. To make it to be present only to travel in the direction of flow. So this is our cork. Okay, ये तो हमारा cork. इनको थोड़ा सा actuator then connected with a rod, hollow metal rod. ऐसा connect कर लिया. It is a small hollow metal rod. So regular float होता है ना, regular float. Regular float connected with a hollow metal rod. Regular float connected with a hollow metal rod. So we can say a hollow metal cylinder which is attached by a cord to the surface float. To the surface float is subsurface. क्या करने के लिए? To control the direction of float. Float direction control करने के लिए. Float direction control करने के लिए. So to guide the direction of movement, to control, to guide, to monitor the direction of movement of float. So this is a hollow cylinder. Hollow cylinder. This is a cord. This is a float. अब तो कुछ डायरेक्शन में चलेगा ना, कुछ डायरेक्शन तो चलेगा ना, then it can travel with certain direction. So that is called subsurface float. Remaining everything, all measurements similar to surface float only. All measurements similar to surface float method. All measurements similar to surface float method. चलो, so same we are talking now, velocity rod method. प्रोसीजर तो सेम होता है बेटा, मटेरियल इज वेरिंग, दैट्स इट. प्रोसीजर तो सेम होता है, मटेरियल तो वेरी होता है वेलोसिटी रॉड में. हो गया एवरीवन? कंप्लीटेड एवरीवन? So this is water flow na. That is why as you have selected the gauge site conditions are there na, Satish garu. Gauge site selection conditions we have given na, rules. So you can select a site without obstruction, without animal flow. So now what happened? You are giving a hollow metal rod or wooden cylinder. This is hollow metal rod. On top, previously where we have given, it is at bottom, na? Hollow metal rod or wood. Hollow metal rod or wood. Now it was connected to certain weight, a big stone or certain weight, so that it can upright, it can go like this. It should be upright and it can go like this. Na? Some weight. It is a rope, not a spring. Rope. That much flexibility we don't have as a hydrologist. We don't have budget for spring and all the things. We don't have budget, बाबू. इतना flexibility तो नहीं दे रहे आपको. सिर्फ आटा के लिए भी आपको कुछ नहीं है. Low budget. Process again same. Process similar to surface float, but required. Surface velocity is equal to average flow velocity. Average flow velocity. No coefficient required. Because it is on surface. But controlled by subsurface. The total control is under subsurface. So because of that reason, surface velocity is equal to average velocity. Whoa. So river rafting, while doing river rafting, there should be people na, on the back of your rafting boat. People are not sitting.
आदर्श गारू, डेंजरस गेम होता है रिवर राफ्टिंग। अरे ही सेफ बोल रहे हैं, कोमा में पूछ रहे बाबू, कोमा या कामा? सुधांकुल, ही सेफ ओनली। पानी में डूबने के बाद, अरे ये तो इंडियन इंडियन पानी नहीं है ना, इनका वजह से सोच रहे पानी का अंदर कुछ है, सुधा गारू का आसपास में होने वाला पानी का अंदर कुछ है। वो अरे छोड़ दो ये बेटा, सुधा गारू, आपका पानी नहीं, हमारा पानी खुद स्वच्छ पानी मिलेगा, कोई ड्रामा कोई कोमा नहीं मिलेगा, टेंशन में मत चलो। चलो गाइस, वी कंटिन्यू टुमारो। कल तो लास्ट क्लास है, टुमारो विल डू सो मेनी न्यूमेरिकल, सो मेनी क्वेश्चंस ऑफ स्ट्रीमगाजिंग। टुमारो इज द लास्ट क्लास, एवरीवन डू जॉइन, ठीक है? चलो आज तो एंड करेंगे। फिलगारू क्वेश्चन स्लाइड होना चाहिए इधर। Width is given here, the cross section of a small river. The cross section of a small river subdivided into 7 segments of each width 1.5 मीटर। सिर्फ हमारा पास सिंगल डब्ल्यू वैल्यू है, फिल सिर्फ हमारा पास सिंगल डब्ल्यू वैल्यू है ना, एंड वी आर हैविंग W2 टू WN। देखो एक बार, ऐसा बोल रहे हैं 7 सेक्शन, हर एक सेक्शन को थियरिटिकल विड्थ बोल रहे हैं, हर एक सेक्शन को 1.5। सो नाउ इफ यू नीड W2, आपको W2 होना चाहिए, तो W2 के लिए W2/2 plus W3/2. If you need W3, W3/2 plus W4/2. But every value is same, na? So you can take 1.5/2 plus 1.5/2. 1.5 भी मिलेगा. If they have given W2 1.5, W3 2.5, then it will vary. But W2 same 1.5, W3 same 1.5 होगा, same रहेगा ना? For example, W2 given 1.5, W3 given 2.5. अब तो W क्या होता है? W2 क्या होता है? W2 1.5/2 plus 2.5/2. Now W4 is given 3.5. Now W3 मिलेगा 2.5/2 plus 3.5/2, 3, ऐसा मिलेगा ना बेटा? But in this question they have given every value is same, every value is same, so that directly you can take, no need to calculate also, directly you can take, no need to calculate also. So we, yes, object is going through the direction of flow, obviously forcefully. And Manish, ये फार्मूला में हम लिखना भूल गए, ये लिखो बोल रहे हैं मनीष बेटा, फार्मूला में पहले हम स्क्वायर लिखना भूल गया, ये लिखो। आज तो 8 बजेगा है ना, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग टेस्ट होता है 8 PM WWE। अरे इनका डर का वजह से आप भी रेस्पॉन्सिबल है। आदर्श उपाध्याय, यू आर ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। निपुण गारू क्या जाग के कह रहे क्या? चलो, आपको 60,000 दे रहे ना, 60,000 सैलरी देने के बाद ऐसा भी ले लेंगे पैसा, फुकेट में 60,000 दे रहे ना बाबू। बाय बाय गाइस, बाय बाय।